हेलो एवरीवन, वेलकम टू लेवल ऑफ फाइनेंशियल्स। वी आर बैक विथ अनदर ट्रेड वीडियो। आप लोगों का भी कैसे गया यार? हमारा तो काफ़ी बोरिंग है। देयर इज़ बिन एब्सोल्युटली जीरो मोमेंटम इन द मार्केट। मंडे टू थर्सडे तो मार्केट फिर निफ्टी बैंक निफ्टी हिला भी नहीं है। इट्स बीन अ एब्सोल्यूट नाइटमेयर फॉर द ऑप्शन बायर्स। बट टुडे फाइनली बैंक निफ्टी हैज़ ब्रोकन डाउन, इट हैज़ टर्न वेल बेरिश एंड टुडे वी जस्ट ट्राइंग टू राइड द ट्रेंड। हमारा एक जोन था 5935 का इन आवर एनालिसिस। इट हैज़ बीन ब्रोकन डाउन, सस्टेन्ड एंड अब एक स्ट्रक्चर ब्रेकडाउन आया है। सो लेट्स सी व्हाट हैपेंस। सीम्स लाइक अ गुड ट्रेड, जस्ट ट्राइंग टू राइड द ट्रेंड, सो वील कीप यू पोस्टेड। क्रेजी मोमेंटम इन द मार्केट फोक्स। हम लोग का टारगेट काफ़ी क्लोज थे। वी आर ऑलमोस्ट हिटिंग 1:3, बट अभी थोड़ा सा रिवर्सल आया है। वी आर ऑलमोस्ट बैक टू आवर कॉस्ट, बट नो वरीज, स्टॉप लॉस इज फिक्स्ड एंड द टारगेट्स आर फिक्स्ड। हमारे टारगेट्स आया तो वेल एंड गुड, विल बुक इट देर। वी कैन बुक इट इन द मिडल जस्ट बिकॉज द मार्केट इज बिन अ लिटिल ट्रैपी एंड इट्स बिन अ लॉन्ग टाइम सिंस इतना मोमेंटम आया है। बट इट्स ओके, वी आर वेटिंग इट आउट। वील हिट आर टारगेट्स when we reach 1:3. So targets are here, guys. We've booked the targets here around about 120 to 140 points on spot, and it's been a good trade. So the lesson from the trade is that कभी कभी market आपका patience बहुत test करेगा. It will lure you to take trades, but there is no momentum, and आप trap हो जाओगे, आपका account low हो जाएगा. And when such trades come, such momentums come, आप लोग trade नहीं ले पाओगे because you'll be scared. So instead of taking some random trades, trust your analysis, trust your process, majorly trust your levels, and only when all of them give you a green signal to take a trade, only then enter into a trade. So if you want to learn more about how to avoid the wrong trades and how to take such trades, do watch all of our videos about our analysis and about our trades. Trust me, they'll help you a lot. You'll get a lot to learn. And please like the video, comment, and subscribe to Level of Financials. Thank you.